लास्ट टाइम हमने कोसी इंटीग्रल थियरम उसका स्टेटमेंट देखा था. नाउ वी आर हैविंग वन मोर स्टेटमेंट. इट इज कॉल्ड द corollary of कोसी इंटीग्रल थियरम. स्टेटमेंट देखने से पहले एक बार हम फिर से कोसी इंटीग्रल थियरम का स्टेटमेंट क्या है लेट अस सी. तो इफ यू आर हैविंग any analytic function f set function which is analytic within and on a simple closed curve C, or you can say contour. Okay. Then integration of this function along the closed curve C is always 0. This is the statement of Cauchy integral theorem. So integration along the curve 0 होने की कंडीशन फंक्शन आपका एनालिटिक होना चाहिए within and on C. Now there is one more corollary based on this Cauchy integral theorem. Suppose the given function f of z, this is analytic in a domain bounded by two simple closed curve, say integrals along curve C and C1. मतलब ये फंक्शन आपका एनालिटिक इन अ डोमेन रीजियन बिटवीन टू सिंपल क्लोज्ड कर्व C. यहां पे अगर एनालिटिक होता है बिटवीन C एंड C1, तो इंटीग्रेशन इफ यू फाइंड इंटीग्रल along the curve C, C के ऊपर आप इंटीग्रल निकालेंगे एफ जेड डी जेड का, और वही फंक्शन का इंटीग्रल along C1, आपका फंक्शन एनालिटिक बिटवीन C and C1. If you integrate along outer curve and if you integrate along inner curve, then the statement says that both answer will be same. तो आप C के ऊपर इंटीग्रल करो या C1 के ऊपर इंटीग्रल करो, the answer is always same. कंडीशन क्या है? फंक्शन मस्ट बी एनालिटिक between two curve C and C1. So value of this integral does not depends on the shape and size of the curve. मतलब कर्व कैसा दिया है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. अगर मान लो आपका बार का कर्व सर्कल दिया हुआ है, सर्कल, और अंदर ट्राइंगल दिया है, एंड योर फंक्शन इज एनालिटिक हियर इन बिटवीन, तो आप सर्कल के ऊपर इंटीग्रल करो या ट्राइंगल के ऊपर करो, दोनों का आंसर सेम रहेगा. So shape does not important when your function is analytic. The same statement you can also generalized. Suppose your function is analytic in a domain between different types of the curve. एक की जगह पे मान लो यहाँ पे एक से ज्यादा हो गया, like this. So your function is analytic in a multiply connected domain. मैंने आपको समझाया था multiply connected domain. So the domain which has hole. Suppose the outer curve is C and these are the inner curve finite numbers of. तो अगर मान लीजिए ये आपका हो गया C1, C2, C3 etc. कितने भी हो जाए 3, 4, 5, 6, 7, then
The Cauchy integral theorem says that integral of the function outside the curve, outer curve, will be same as integral along C1 plus along C2 plus along C3 and so on. So the theorem can be extended to n numbers of the curve which are lies within simple closed curve C. So what is the statement? Let us see. If fz is analytic in the region included between two simple closed curve C and C1 like this, then integral along C will be same as integral along C1. In general, if C1, C2, C3 be any number of simple closed curves within C like this, कोई भी हो, अंदर के शेप के ऊपर आपको डिपेंड नहीं करना है, स्क्वायर हो, सर्कल हो, ट्राइंगल हो, इट डजंट मैटर. Then integral along C will be same as integral along C1 plus integral along C2 plus integral along C3 and so on. तो हमने देखा एक Cauchy integral theorem and then its corollary. Now we are having another formula. It is called Cauchy integral formula. It is slightly different than Cauchy integral theorem. Cauchy integral theorem से different है. Suppose अगर आपके पास कोई सिंपल क्लोज्ड कर्व C दिया हुआ है, if C is the function contour, and assume that your function fz is analytic within and on C. देखो अभी सिर्फ इतना ही दिया है कि fz is analytic within and on C. यहाँ पे everywhere the function is analytic. तो Cauchy इंटीग्रल थियरम से क्या होगा, हमने आगे प्रूव किया कि इंटीग्रेशन along C of fz dz equal to 0. ये हमारा हो गया Cauchy इंटीग्रल थियरम, जिसमें इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है. Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला में स्टेटमेंट में थोड़ा डिफरेंस है. fz is analytic within and on C, and suppose that z0 or z0 any point which lies within C. मतलब आपका फंक्शन तो एनालिटिक है एवरीवेयर विदिन सी, और एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट है जो सी के अंदर आ रहा है. देन दिस फंक्शन f of z डिवाइड बाय z माइनस z0. देखो इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन along the curve C with respect to z equal to 2 pi I f of z0. This formula, it is called Cauchy integral formula. So in Cauchy integral theorem, the value of the integral along the simple closed curve C is 0, provided the function is analytic everywhere within and on a simple closed curve C. But if the function is given like this, f of z upon z minus z0, तो ये फंक्शन आपका एनालिटिक हो गया except which point, except which point, except z0, z0 के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइन होता है.
So if this integrand has denominator which is 0 at some point, and if this point lies within C, जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है वो पॉइंट C के अंदर आता है, इफ इट इज इनसाइड द C, तो ये पूरे इंटीग्रल का आंसर हो जाएगा 2 pi I f of z0. How it will be implicable? See, हमने एक एग्जांपल देखा था कोसी इंटीग्रल थ्योरम के बाद कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल z square divided by z minus 2 dz, C क्या था? C is the mod z equal to 1. So mod z equal to 1, this is circle, radius 1. So this point it is 1. ठीक है? Now if you look at this whole function, so this function is analytic everywhere. इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा everywhere. कौन से पॉइंट पे नहीं मिलेगा? एक्सेप्ट 2. z इक्वल टू 2 के ऊपर ये फंक्शन क्या हो जाता है? अनडिफाइन हो जाता है. ठीक है? और z इक्वल टू 2 ये पॉइंट यहां पे आएगा. So if C is the mod z equal to 1, then you can say that your function is analytic everywhere within C. तो कोसी इंटीग्रल थ्योरम से इसका आंसर होगा 0, जो लास्ट टाइम मैंने समझाया था. नाउ इफ आई चेंज दिस कंडीशन, अगर मैं इसको यहां से चेंज कर लेता हूं, ये mod z इक्वल टू 1 की जगह पे इफ आई विल राइट सपोज mod z इक्वल टू 3, सेम इंटीग्रल but the path is mod z equal to 3. So what is mod z equal to 3? mod z equal to 3 क्या होगा? सर्कल. रेडियस कितनी होगी उसकी? 3. What will be the radius? 3. ठीक है. एंड सेंटर ओरिजिन. ठीक है. तो आपका ये सर्कल 3 रेडियस का ऐसे हो जाएगा, ये बड़ा वाला. ठीक है. अभी ये फंक्शन तो आपका एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट z इक्वल टू 2. सो इफ यू लुक एट दिस इंटीग्रैंड, देन दिस फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर, and the point at which the integrand is 0 lies within C. C के अंदर आता है, ये पॉइंट अंदर आ गया. अभी अंदर आ जाएगा तो ये इंटीग्रल का आंसर आपका क्या होगा? कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला से इसका आंसर आएगा 2 pi I f of 2. यहाँ पे z0 इक्वल टू 2 है. अच्छा, इसको किसके साथ कंपेयर करना है अभी आपको? यू हैव टू कंपेयर दिस इंटीग्रल with this standard form. आज इंटीग्रेशन है અને આ સ્ટાન્ડર્ડ फॉर्म साथे कंपेयर कर. 0 equal to z square, put z equals to 2. So if you put z equals to 2, so what will be the answer? This is 4. If you put here 4, so the answer of this integral will be 4 pi I. तो इस तरह से आपको कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है. So if the denominator is 0 at some point, and if that point does not belongs to C, तो आपका आंसर हो जाएगा 0 by using कोसी इंटीग्रल थ्योरम.
और अगर वो पॉइंट इनसाइड हो गया, अंदर की तरफ आ गया विद इन सी, तो उसका आंसर हो जाएगा 2 पाई आई एफ ऑफ ए। तो ये दो प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं, आपको डिसाइड करना है कि व्हेन द फंक्शन और इंटीग्रैंड हैज डिनोमिनेटर जीरो, तो आपको देखना है जो पॉइंट के ऊपर जीरो होता है वो अगर बाहर चला गया तो कोशी इंटीग्रल थ्योरम से उसका आंसर हो जाएगा जीरो, और अगर अंदर आ गया तो उसका आंसर हो जाएगा 2 पाई आई एफ ऑफ ए। सो द स्टेटमेंट इज लाइक दिस, if f set is analytic within and on a simple closed curve C and z naught be any point within C, then integral f z upon z minus z0 dz equal to 2 pi I f of z0. This is the statement of Cauchy integral theorem. And the generalized form of this Cauchy integral theorem you can write in this way: treating z0 as a parameter and differentiating n times with respect to z0, this equation under the integral sign, we get the integral f of z divided by z minus z0 power n plus 1 dz equal to 2 pi I divided by n factorial f nth derivative of z0. ये क्या कहना चाहता है कि ये जो फॉर्मूला हमारे पास दी हुई है, if this formula, if you differentiate this formula whole with respect to z0, z0 को वेरिएबल समझ लो, पैरामीटर करके with respect to z0 इसका डेरिवेटिव करेंगे n टाइम्स, तो आपका रिजल्ट इस तरह का हो जाएगा। ओके, कैसे? आई विल शो यू ब्रीफली। सपोज this statement is given. Now I differentiate this with respect to z0 keeping z constant. z को मैं कांस्टेंट रखूंगा, with respect to z0 इंटीग्रल करूंगा, तो क्या होगा? ये इंटीग्रेशन, this is integral with respect to z and we are creating z constant. ठीक है, तो इंटीग्रल सेम रहेगा, इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं होगा, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट हो जाएगा। 1 अपॉन z माइनस z0, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z0 क्या होगा? z माइनस z0 होल स्क्वायर dz इक्वल टू 2 पाई I, और ये f डैश z0 एक बार हो गया। दूसरी बार इसका इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल f ऑफ z 1 अपॉन z स्क्वायर का इंटीग्रल होगा 2 डिवाइड बाय z माइनस z0 क्यूब। वैसे तो माइनस आता है, लेकिन ये z0 का कोएफिशिएंट -1 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, dz इक्वल टू 2 पाई I f डबल डैश z0। एक बार फिर से इसका करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो c f of z 2 into 3 6 माने 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय z माइनस z0 पावर 4 dz 2 पाई I f थर्ड डेरिवेटिव z0। ठीक है, तो यहां पे अगर एक बार और करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा? 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव। So in general, if you take n times, so you will get it over here n factorial. This power becomes n plus 1 and this derivative becomes n times. And taking this n factorial in denominator, so you will get your required result. तो कैसा होगा? इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो जब भी ऐसा कोई इंटीग्रल निकालना है, यहाँ पे अगर पावर दी है आपको
जैसे 3 पावर 4 पावर, तो ये रिजल्ट लगेगा। दिस इज जनरलाइज फॉर्म। इफ यू टेक n इक्वल टू 0, यहाँ पे n इक्वल टू 0 पुट कर लो तो ये रिजल्ट आ गया। ओके, डाउट है यहाँ पे कुछ? ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। No, sir. नाउ वी आर हैविंग सम कंक्लूडिंग रिमार्क्स। नंबर 1, it follows from the Cauchy integral formula CIF, if the function is known to be analytic within a simple closed curve C, then the value of the function and all the derivatives can be found at any point within C. શું કહે છે કે જો તમારું ફંક્શન fz એ કોઈ કર્વ C ના દરેક પોઈન્ટ ઉપર જો એનાલિટિક હોય એટલે ડિફરન્સિએબલ હોય, તો આના દરેક પોઈન્ટ ઉપર within C you can find the value of the function, એટલે ફંક્શનની તમે વેલ્યુ શોધી શકો, as well as you can find derivative of any order within C, and the derivative is given by f nth derivative z0 equal to n factorial divided by 2 pi I integral f of z divided by z minus z0 के n plus 1 power dz। कहां से लिखा है? कहां से लिखा है? दिस इज रिटन फ्रॉम दिस फॉर्मूला। यहां से हमने वी हैव टू मेक f nth derivative as a subject of this equation, so we'll get this result। एक चीज हो गई, ठीक है। और ये दूसरी चीज, दिस फॉर्मूला, if fz is analytic within and on a simple closed curve C, then remember this result। આ એક્ઝામ્પલમાં બહુ કામ લાગશે। આખી જે થિયરી જે છે એને સમરાઇઝ કરી દીધી છે બે સ્ટેપમાં। This is most important। એ શું કહે છે કે જો ફંક્શન તમારું એનાલિટિક હોય within and on C, then value of this integral fz upon z minus z0 n plus 1 dz એ કેટલી આવશે? 2 pi I upon n factorial nth derivative z0 provided the point lies within C। જે મેં તમને આગળ સમજાવ્યું કે અહીંયા જે કર્વ આપેલો હોય C, જેમાં અંદર ઇનસાઇડ પોઈન્ટ હોય, તેનો આન્સર 2 pi I divided by n factorial into nth derivative થાય। કયો રિઝલ્ટ लाग्यो? કયો રિઝલ્ટ लाग्यो? Cauchy integral formula। અને જો આ પોઈન્ટ z0 એ આઉટસાઇડ ચાલી જાય તો this function is analytic everywhere within and on C, तो પછી Cauchy integral theorem थी इसका आंसर हो जाएगा 0। तो याद रखना है, जब भी आपको कोई इंटीग्रल निकालना है तो इसका आंसर होगा इधर 0 और 2 pi I by n factorial nth derivative z0 whenever you are having here power more than 1। आपको क्या देखना है? You have to check the point at which the denominator becomes 0। जहां पे डिनोमिनेटर, जिसका छेद जहां पे 0 होता है, वो पॉइंट का लोकेशन आपको डिसाइड करना है। अगर आपका पॉइंट इनसाइड हो गया तो Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा, पॉइंट आउटसाइड हो गया तो Cauchy इंटीग्रल थ्योरम लगेगा। ठीक है, देखते हैं अभी किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। लुक एट द फर्स्ट प्रॉब्लम। इवैल्यूएट इंटीग्रल z minus z0 raised to minus 1 dz, where C is the contour and the point z equal to z0। Now there are two possibilities: outside C, inside C। outside C and inside C। outside C means does not belongs to C, inside means belongs to C। So how to solve this problem? So you have to compare the integral with standard form। आपको सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। So z minus z0 minus 1 dz equal to
C 1 divided by Z minus Z0 dz. Now compare with the standard form. Standard form क्या है आपका इंटीग्रेशन का? ये रहा. This is the standard form इंटीग्रल का. ठीक है, तो न्यूमरेटर में आएगा आपका fz. Z0 will be the point at which the denominator becomes 0. C जो दिया है वो, इसका आंसर क्या होगा? अगर इनसाइड होगा तो CIF लगेगा, आउटसाइड होगा तो 0. If you compare with this one, so the value of f of z 1, okay, fz is 1 and z is 0 is the point. Now there are two possibilities. First, it is given contour C first. Now in first, what is given? Z0 is outside C. So Z0 does not belongs to C. So you can say that this whole function is analytic. This whole function is analytic everywhere except z equal to Z0. So here integrand is analytic because this is polynomial function. Analytic everywhere except Z0 and Z0 does not belongs to C. So you can say that your function is analytic everywhere within and on C. ये आपका Z0 कहीं आउटसाइड हो गया, यहां पर भी somewhere this is Z0. So therefore fz is analytic. Therefore fz is analytic within and on a given contour C. A given contour C. Contour means simple closed curve C. So by Cauchy integral theorem, the value of z minus Z0 raised to -1 dz equal to 0. ठीक है? Second part. Now in the second part, the point is given inside C. Number 2. Here Z0 belongs to C. So this is C, your curve. It is always taken to be in anti-clockwise direction. And this is the point Z0. So therefore integrand is analytic except Z0 and Z0 lies inside C. So by Cauchy integral formula, integral C जो है
શું છે આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા fz ડિવાઇડ બાય z minus z0 dz equal to 2 pi I f0. What is fz? fz ની વેલ્યુ કેટલી છે આ એક્ઝામ્પલમાં 1. 1 એટલે ન્યુમરેટર 1 છે ને એટલે fz equal to 1. હવે આમાં આપણે fz માં z equal to z0 મૂકી દેવા. તો જો fz 1 હોય તો f of z0 શું થશે 1 જ થાય. So the answer is 2 pi I. કોઈ ડાઉટ? No, sir. એટલે ઇન્ટિગ્રલ ના પ્રોબ્લેમ એક્ઝામ માં પૂછે 3 માર્ક્સ નો કે ઇન્ટિગ્રલ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. So how to find using CIT or CIF? ચેક કરી લેવાનું કે પોઈન્ટ ની લોકેશન ક્યાં આવે છે. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ, evaluate integral z plus 3 divided by z minus 1 dz where C is the circle. जो બે પાર્ટ આપ્યા છે, mod z equal to 2 and mod z equal to 1/2. Solution. Integral I z plus 3 divided by z minus 1 dz અને compare કરી દો standard form સાથે. So if you compare with standard form તો f of z કેટલો આવશે z plus 3 denominator 0 થશે at the point 1. So z0 equal to 1. Now first A. C is the circle mod z equal to 2. So this is circle. Center 2, sorry 0, radius 2. Now look at the position of this point z0. Where is z0? 1. 1 क्या આવશે બોલો? ઇનસાઇડ આવશે કે આઉટસાઇડ આવશે? Inside. 1 થઈ ગયું ને? So this point is 1. તો 1 is inside. તો inside point માટે આના ઉપર શું લાગશે? Cauchy integral formula. બરાબર? આખો ઇન્ટિગ્રેન્ડ છે ને, this integrand is analytic everywhere except z equal to 1 and 1 lies within C. જો આ 1 બહાર ચાલ્યો જતે તો આનો આન્સર થઈ જશે 0. ઓકે, તો લખો observe that the integrand એટલે જેનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે તે ફંક્શન. observe that the integrand is analytic everywhere except z equal to 1. And the point z equal to 1, the point z equal to 1 lies within C. Therefore, by Cauchy integral formula, integral
f of z divided by z minus z0 dz equals to 2 pi I f of z0. એટલે કે c z plus 3 divided by z minus 1 dz 2 pi I f1. What is f1? f1 કેટલો થશે? 4. હા 4. 1 થશે? 65 नंबर ऋषि यस सर। f1 कितना होगा? 1। वेरी गुड। 51 नंबर 51 नंबर Yes, sir. व्हाट इज f1? हाँ वैल्यू कितनी F1. થશે? Hello. F1, sir. हाँ 40 हाँ 1, 1. 1 વેરી ગુડ। f1 નો મીનિંગ શું થાય બેટા? what is the meaning of f1? $42 number Earth Patel. Yes, sir. What is f1? f1 કેટલો થશે? 1 થયો સર। f1 નો મીનિંગ શું થાય? f1 ની માં તને શું સમજ પડે છે? what do you mean by આ દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર? હા અમારું પોઇન્ટર દેખાય છે? હા સર। શું લખ્યું છે? f of 1 નો મીનિંગ શું થાય? તને શું સમજ પડે? f of 1 એટલે શું? छत्तीस नंबर उमंग मिस्त्री। Yes, sir. f1 નો મીનિંગ શું થાય? Value of f of z at point z equal to 1. બરાબર છે। તો કેટલી થશે વેલ્યુ? $29 નંબર જનક। Yes, sir. હા f1 ની વેલ્યુ કેટલી થાય? નંબર 4 4। નંબર 4 Yes, sir. જેમિન f1 ની વેલ્યુ કેટલી થશે? Sir, 4. કેવી રીતે? Sir, ઉપર f of z is equal to z. હા f1 એટલે વેલ્યુ શોધવાની f ની 1 પાસે। આપણા કેસમાં અહીંયા fz મેં લખી દીધો છે ઓલરેડી। કેટલો છે? z plus 3 છે ને? તો અહીંયા z equals to 1 Yes, sir. કરવાનો આ પોઈન્ટમાં। અહીંયા z equal to 1 મૂકો એટલે 4 થાય। so f1 is 4. so 2 pi I into 4 એટલે એનો આન્સર આવશે 8 pi I। ક્લિયર છે? આ પહેલો પાર્ટ કર્યો એ। હવે સેમ ઇન્ટિગ્રેશન માટે બી પાર્ટ તમને બદલી નાખ્યો છે। બી માં શું આપ્યું છે? મોડ z equal to 1/2 b
in the B, C is mod Z equal to 1/2. હવે બોલ 42 અર્થ પટેલ. Mod Z equal to 1/2 શું આપશે? What it represent? $56 number. Yes. Yes, પ્રજાપતિ. Yes, sir. Mod Z equal to 1/2 શેનું ઇક્વેશન છે? શું આપશે? Circle. સર્કલ. કયું સર્કલ આવશે? એની રેડિયસ કેટલી થશે? 1/2 અને center 0. 1/2 બરાબર ને? એટલે આ સર્કલ ની ઉપર જો બીજું સર્કલ બીજું બનાવી દઉં તો એ સર્કલ ની રેડિયસ 1/2 એટલે આવું થાય. આવું થાય. રેડિયસ 1/2. હવે આ ફંક્શન તમારું એનાલિટિક છે. This function is analytic everywhere except which point? Z equal to 1. હવે Z equal to 1 એ આ B સર્કલ ના ઇનસાઇડ છે કે આઉટસાઇડ? Outside. આઉટસાઇડ હોય તો આન્સર શું આવશે? 0 થઈ જાય. 0. બરાબર ને? તો લખો નીચે. Observe that the integrand is analytic everywhere within and on C. Within and on C, circle આપણું mod Z equal to 1/2. Therefore, by Cauchy integral theorem, integral f of z divided by z minus z0 equal to 0. Therefore, C આપણે અત્યારે રેફરન્સ z0 equals to 1 લેવાનો છે, યાદ રાખજો, અને fz equal to z plus 3 લેવાના છે. તો z plus 3 by z minus 1 dz equal to 0. એટલે એક્ઝામ્પલમાં તમે જો સમજ્યા હો તો કોઈ જગ્યા પર ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું આવતું નથી. Just you have to decide the point at which the denominator 0. The denominator 0. And find the location of this point. If it is inside C, you can write the answer by CIF. It is outside C, you can write answer by using Cauchy integral formula. Third question. Evaluate fz upon z minus pi by 4 cube dz, where C is the circle mod z equal to 1. देखो अभी ये इंटीग्रल में आपको पावर दिया है तो आपको पावर वाली फॉर्मूला यूज करनी है. सो यू कंपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंटीग्रल विद द स्टैंडर्ड notation solution. So integral I C sin z divided by z minus pi by 4 cube dz. Now if you compare this integral with the standard form, so the standard form આનો આવું છે, C f of z minus z0 n plus 1 dz આવું થાય. કેટલા આન્સર આવે આ ઇન્ટિગ્રલના? પોસિબલ આન્સર 34 નંબર.
34 નંબર નથી, 67 નંબર નથી. હા બોલ બેટા. Yes, sir. હે ઇન્ટિગ્રલ આજે મેં લખ્યું છે અહીંયા સ્ટેન્ડર્ડ ફોર્મ, આના પોસિબલ આન્સર કેટલા આવી શકે? આના પોસિબલ આન્સર કેટલા આવે? 10 નંબર સ્મિત કુમાર. Yes, sir. આ ઇન્ટિગ્રલ ના પોસિબલ આન્સર કેટલા આવે? લખ્યું છે ને નોટમાં? લખી છે નોટ? Yes, sir. જો શું આવે, કેટલા પોસિબલ આન્સર આવે એના? કેટલા છે અહીંયા છે જો, એ જવાબ આવી શકે આના. 0 અથવા તો 2πi/n ફેક્ટોરિયલ nth ડેરિવેટિવ ઓફ z0. કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે? તો આ જ્યાં ડિનોમિનેટર 0 થાય એ પોઈન્ટની પોઝિશન ઉપર ડિપેન્ડ કરે. જે પોઈન્ટ સી ની બહાર ચાલી જાય, આઉટસાઇડ જાય તો 0, ઇનસાઇડ હોય તો એનો 2πi/n ફેક્ટોરિયલ nth ડેરિવેટિવ z0. આ એનો સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ છે. So we have compared here this integral with this standard form. So what is f z? f z કેટલો થશે? Sin Z. તો f of z equal to sin z, એક વસ્તુ. પછી z0 કેટલો આવશે? પાવર કમ્પેર કરો, n+1 equal to 3, તો n equal to શું આવે? 2. અને c તમને શું આપ્યો છે? mod z equal to 1. હવે એક જ વસ્તુ કરવાની છે કે આ z0 ની પોઝિશન જોવાની. જો ઇનસાઇડ c આવી જાય તેનો આન્સર નોટ 0 આવે, પેલી ફોર્મ્યુલાથી લાગશે. અને જો એ પોઈન્ટ બહાર ચાલી જાય તેનો આન્સર 0 આવશે. સો લેટ અસ સી z0 equal to π/4, mod z equal to 1. Mod z equal to 1 is a circle, center origin, બરાબર છે? Mod z equal to 1. Now you tell me where the π/4 exists, inside or outside? 0. ચલો π/4 એટલે શું? પાઈ ની વેલ્યુ કેટલી? રેડિયન માં 3.14 થાય, 3.14. 3.14 divided by 4. ક્લિક કરતા નાની જ આવશે. So you will get this is z equals to 1. So you will get somewhere over here π/4. Right? So it is inside. So answer is not 0. So how to write? Now fz equal to sin z. Fz equal to sin z is analytic everywhere because it is differentiable. So the function is analytic everywhere and π/4 lies inside C. So how to write the answer? Observe that fz is analytic within C and z0 equals to π/4 lies inside C. So by Cauchy integral formula,
इंटीग्रल c sin z z માઇનસ પાઈ બાય 4 का क्यूब dz. ચાલો શું લાગશે ફોર્મ્યુલા અહીંયા 2 pi I n factorial. What is n? 2. 2. So 2 factorial. Nth derivative એટલે f double dash at pi by 4. ખબર છે ને જવાબ n 2 pi upon n factorial. ચલો f double dash એટલે sin નું બે વાર વિકલન કરવાનું. તો શું થશે બે વાર sin નું વિકલન? 2 factorial is 2. Minus sin z. 2 factorial is 2. So 2 cancel. Right? So equal to pi I. साइन का दो बार डेरिवेटिव क्या होगा? साइन का होगा cos, cos का होगा माइनस साइन. सो माइनस साइन z की जगह पे पाई बाय 4. सो व्हाट इज साइन पाई बाय 4? 1 by root 2. सो माइनस पाई I by root 2 और you can multiply by root 2. So answer is minus pi root 2 by 2 into I. ऐसे करना है. ठीक है? Yes, sir. अच्छा, चलो अभी मैं मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई कर दूं. यहाँ पे सी की जगह पे इफ आई विल राइट मोड z इक्वल टू 1 by 4 तो क्या होगा? इनसाइड ही होगा. इनसाइड होगा. 125 इनसाइड होगा. हाँ, इनसाइड ही होगा. 5 by 4 इनसाइड होगा. 1 by 4 आउटसाइड होगा. 0. 5 by 4 की वैल्यू कितना है? कैलकुलेटर निकालो आप. 3.14 by 4. 0.785. हाँ, और 1 by 4 कितना होगा? 0.25. 0.5. 0.25. 0.25. तो कौन सी बड़ी वैल्यू है? 0.785. तो क्या होगा पॉइंट? आउटसाइड होगा. बाहर चला गया ना. यस सर. बाहर चला गया तो फिर ये पॉइंट इज आउट. या आप ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते हो यहाँ पे. सॉरी, आप डायरेक्ट देख सकते हो ना. इधर गया. कैंसिल हो गया. चलो कोई बात नहीं. तो ये अगर इफ यू टेक इट हियर, इफ यू टेक सपोज मोड z इक्वल टू 1 by 4 तो आपका पास z0 कितना है? पाई बाय 4 है कि नहीं है? तो ये तो 4 कॉमन है. पाई इज ग्रेटर देन 1. तो आउटसाइड हो गया. आउटसाइड हो जाएगा तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट लिखना है 0. लेकिन क्या लिखना है आपको? रीजन लिखना है कोसी इंटीग्रल थ्योरम. CIT से 0 होगा बिकॉज द पॉइंट इज आउटसाइड. आउटसाइड है इसलिए 0 नहीं है. फंक्शन एनालिटिक है एवरीवेयर विद इन एंड ऑन C. देयर इज नो पॉइंट इनसाइड द C एट विच द फंक्शन इज अनडिफाइंड. इसीलिए इसका 0 होता है. ठीक है, चलो यहां तक